TeamUPAI welcomes you to the orientation module on artificial intelligence. Welcome to the presentation on Computer Fundamentals by TeamUPAI. TeamUPAI द्वारा कंप्यूटर फंडामेंटल पर प्रस्तुति में आपका स्वागत है. Can you imagine your life without a computer? क्या आप कंप्यूटर के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? Every time you make a purchase on Amazon or post a picture on Instagram, your computer is executing instructions and processes a massive amount of data. हर बार जब आप Amazon पर खरीदारी करते हैं या Instagram पर कोई तस्वीर पोस्ट करते हैं, तो आपका कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित कर रहा होता है और बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करता है. Computers are one of the most important inventions in human history. कंप्यूटर मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है. Computer fundamentals is the study of the basic concepts and terminologies associated with computers. It is important to understand the fundamentals in order to use computers effectively and efficiently. कंप्यूटर फंडामेंटल कंप्यूटर से जुड़ी बुनियादी अवधारणाओं और शब्दावली का अध्ययन है. कंप्यूटर का प्रभावी ढंग से और कुशलता से उपयोग करने के लिए बुनियादी बातों को समझना महत्वपूर्ण है. We have come a long way from the very first computer and even the first smartphone. But how much do you really know about the history and their evolution? Think about all of the things you wouldn't be able to do, like sending an email, online shopping, finding an answer to a question instantly. उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो आप नहीं कर पाएंगे. एक ईमेल भेजना, ऑनलाइन दुकानदारी करना, किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत ढूंढना. While today we use computers for both work and play, the computer was actually created for an entirely different purpose. जबकि आज हम काम और खेल दोनों के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर वास्तव में एक पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए बनाया गया था. So here is a brief history of computers, from their primitive number crunching origins to the powerful modern day machines that surf the internet, run games, and stream multimedia. The history of computers goes back as far as 2500 BC with abacus. The abacus was initially used for arithmetic tasks. The earliest abacus, referred to as the Sumerian abacus, dates back to roughly 2700 BC from the Mesopotamia region. Abacus का उपयोग शुरू में अंकगणितीय कार्यों के लिए किया जाता था. सबसे पहला अबकस, जिसे सुमेरियन अबकस कहा जाता है, लगभग 2700 बीसी का मेसोपोटामिया क्षेत्र से है. चार्ल्स बैबेज, द इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर, is known as the father of computers. He created a steam-powered computer known as the analytical engine in 1837, which kick-started computer history. अंग्रेजी गणितज्ञ और आविष्कारक चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है. उन्होंने 1837 में एक भाप से चलने वाला कंप्यूटर बनाया जिसे विश्लेषणात्मक इंजन के रूप में जाना जाता है, जिसने कंप्यूटर इतिहास की शुरुआत की. पंच कार्ड्स, द फर्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन कंप्यूटिंग हार्डवेयर, came after the result of the 1880 US census that took 7 years to tabulate. पंच कार्ड कंप्यूटर हार्डवेयर में पहला बड़ा विकास 1880 की अमेरिकी जनगणना के परिणामों को सारणीबद्ध करने में 7 साल लगने के बाद हुआ. UNIVAC was the first mass-produced general-purpose computer invented by John W. Mauchly and J. Presper Eckart. UNIVAC जॉन डब्ल्यू मॉक्ले एंड जे प्रेस्पर एकार्ट द्वारा आविष्कार किया गया पहला बड़े पैमाने पर निर्मित सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर था.
Alan Turing developed an idea for a universal machine in 1936 called the Turing machine that would be able to compute anything that is computable. The concept of modern computers was based on his idea. 1936 में एलन ट्यूरिंग ने एक सार्वभौमिक मशीन के लिए एक विचार विकसित किया जिसे ट्यूरिंग मशीन कहा जाता है, जो गणना योग्य किसी भी चीज की गणना करने में सक्षम होगी। आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा उनके विचार पर आधारित थी। However, the modern history of computers begin with the analytical engine. Yet, the inventions of the transistors in 1956, the integrated circuits in 1964, and the microprocessors in 1972 are what made computers much smaller and faster. हालांकि कंप्यूटर का आधुनिक इतिहास विश्लेषणात्मक इंजन से शुरू होता है, फिर भी 1956 में ट्रांजिस्टर, 1964 में इंटीग्रेटेड सर्किट और 1971 में माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार ने कंप्यूटर को बहुत छोटा और तेज बना दिया। Now let us define a computer. A computer is an electronic device that can process and store data, perform calculations and execute instructions. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संसाधित और संग्रहित कर सकता है, गणना कर सकता है और निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। It is a machine that has revolutionized the way we work, communicate and interact with the world around us. यह एक ऐसी मशीन है जिसने हमारे काम करने, संवाद करने और हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में क्रांति ला दी है। A computer is an electronic device that can perform various operations and calculations at high speed. It is a machine that can be programmed to carry out arithmetic or logical operations automatically. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो उच्च गति पर विभिन्न संचालन और गणना कर सकता है। It is basically made up of hardware and software, which enable it to perform a diverse range of tasks. यह मूल रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना है जो इसे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। If you are looking to buy a computer, you can choose from a variety of options, including laptops, desktops, notebooks, and tablets from different brands such as HP, Lenovo, Asus, and Dell. यदि आप एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो आप HP, Lenovo, Asus और Dell जैसे विभिन्न ब्रांडों से लैपटॉप, डेस्कटॉप, नोटबुक और टैबलेट सहित विभिन्न विकल्पों में से चुन सकते हैं। Now let's talk about computer hardware in detail. Computer hardware refers to the physical components that make up a computer system. कंप्यूटर हार्डवेयर उन भौतिक घटकों को संदर्भित करता है जो एक कंप्यूटर प्रणाली बनाते हैं। It consists of hardware components such as CPU, often referred to as the brain of the computer. The CPU executes instructions and performs calculations. Second is motherboard, the main circuit board of a computer that connects and allows communication between various hardware components. Third, RAM, that is often referred to as memory. Random access memory stores data that the CPU needs to access quickly. It is volatile memory, meaning its contents are lost when the computer is powered off. Fourth, storage devices. Computers use various types of storage devices to store data permanently, like hard disks use spinning magnetic disks, while SSDs use flash memory for faster access. Fifth, input-output devices. These devices allow
Interaction with computer examples include keyboards, mouse, monitors, printers, scanners, and speakers. Thus, computer hardware is constantly evolving with new technologies and components being introduced regularly to improve performance, power efficiency, and reliability. इस प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर लगातार विकसित हो रहा है, प्रदर्शन, शक्ति दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए नई तकनीकों और घटकों को नियमित रूप से पेश किया जा रहा है. After this, let's talk about computer software in detail. Computer software is a set of instructions that tell a computer what to do. It refers to the programs and applications that run on a computer system. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है या उन कार्यक्रमों और अनुप्रयोगों को संदर्भित करता है जो एक कंप्यूटर प्रणाली पर चलते हैं. It is the non-tangible part of a computer system that enables the hardware to execute operations and perform desired functions. यह एक कंप्यूटर प्रणाली का गैर मूर्त हिस्सा है जो हार्डवेयर को संचालन निष्पादित करने में और वांछित कार्यों को करने में सक्षम बनाता है. Computer software can be classified under the following categories. First, system software. System software includes programs that facilitates the smooth functioning of a computer system. It includes operating systems, device drivers, firmware, and other software that manage hardware resources and provide a foundation for other softwares to operate. Operating systems is a fundamental software that manages computer hardware and provides a platform for other softwares to run. Examples include MS Windows, Mac OS, Linux, and iOS. Device drivers. Device drivers are software components that enable communication between the operating system and the hardware devices. They allow the operating system to control and utilize various hardware components such as printers, scanners, and graphic cards. Firmware. Firmware is a type of software that is embedded in computer hardware. It provides low-level control and instructions for specific hardware devices or components such as BIOS, that is basic input-output systems, in computers, or firmware in devices like routers and printers. Next category is application software. Application software refers to programs designed to perform specific tasks or provide functionality to users. Examples: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Photoshop, etc. Next is utility software. Offers tools that assist in managing and optimizing computer systems. This includes antivirus softwares, disk cleaners, system maintenance tools, backup softwares, and file compression tools. Now that we are aware of the basic components of the computer, let's try to learn about the working of a computer system. अब जब हम कंप्यूटर के बुनियादी घटकों के बारे में जानते हैं, तो आइए कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के बारे में जानने का प्रयास करें. The diagram that illustrates the primary components of the computer system is known as the block diagram of the computer. A block diagram of a computer represents the major components and their interconnections. It provides a high-level overview of how different hardware components interact with each other. कंप्यूटर प्रणाली के प्राथमिक घटकों को दर्शाने वाले आरेख को कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख के रूप में जाना जाता है.
कंप्यूटर का एक ब्लॉक आरेख प्रमुख घटकों और उनके अंतर संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है या एक उच्च स्तरीय अवलोकन प्रदान करता है कि विभिन्न हार्डवेयर घटक एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। The input unit is the platform from where the raw data is passed into the computer system. The input can be in any form. For example, the mouse-clicked input, button input, keyboard input, etc. The CPU is the primary component that processes the input passed into the computer. It is also called the heart or brain of the computer. The CPU has two components, arithmetic logical unit ALU and control unit, that is CU. The arithmetic logical unit is the digital circuit that takes these zeros and ones and performs the necessary arithmetic operations on it and releases the result as the output asynchronously. The CU is like the traffic guy. It controls the instructions flowing in and out of the CPU. The raw data from the input unit is saved in the storage unit. It is the place where the data that is to be processed and processed data is stored. The storage unit is further classified into two parts, primary storage and secondary storage. Primary storage. This storage is also known as the main memory of the computer system. This part of the storage unit holds the data, programs, and instructions that are currently in use. This storage part resides in the motherboard. Primary storage contains the RAM and ROM of the computer system. Secondary storage, it is the non-volatile and permanent data storage device. It is the place where the data is stored for a short or a long time. Example, hard disk or solid state drives, that is SSDs. Next is output unit. The output unit is the place through which the computer system outputs the processed data. Examples, computer screen, speakers, printers, etc. Now that we are through with the working of a computer, let's talk about the input devices. Input devices are hardware peripherals that allow users to provide communication, commands or data to a computer system. इनपुट उपकरण हार्डवेयर परिधीय होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर प्रणाली को जानकारी, आदेश या डेटा प्रदान करने की अनुमति देते हैं. Input devices can be classified under the following categories like pointing devices. Example, mouse, trackball, light pen, touchpad. Next, text input devices, that is keyboard, scanners, barcode reader or OMRs. Third, audio video input devices like CCTVs, webcams, microphones. Next is gaming input devices like joysticks or gamepads. Now let's talk about output devices in detail. The output devices are peripheral devices that are used to display or produce the results of processing by the computer into human readable form. आउटपुट उपकरण परिधीय उपकरण हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा संसाधित आउटपुट को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है. Depending on the type of output produced, they can be classified as visual output devices, that is monitor. A monitor or display device visually presents output in the form of text, images, video, and graphics. They come in different types including LCD, that is liquid crystal display, LEDs, light emitting diodes, and OLEDs, organic light emitting diodes. Next is audio output devices like speakers. Speakers are audio output devices that produce sound and allow users to hear audio content including music, system sounds,
and multimedia presentations. Next is headphone. Allow users to privately listen to audio content without disturbing others. Third, hard copy devices, printers, DMPs, lasers, inkjet printers. Produce hard copies of digital documents or images on paper or other printable media. And plotters are specialized output devices used to produce high quality drawings, maps, and designs. Next category of output devices are projectors that are used to display computer generated images or video onto a larger screen or a surface. It is commonly used for presentations, movies, and multimedia content in larger settings. Computer hardware and software work together to process and store data. Data representation refers to the form in which data is stored, processed, and transmitted. It is crucial for efficient data handling and retrieval. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेटा को संसाधित करने और संग्रहित करने के लिए एक साथ काम करते हैं। डेटा प्रतिनिधित्व उस रूप को संदर्भित करता है जिसमें डेटा संग्रहित, संसाधित और प्रेषित किया जाता है। यह कुशल डेटा हैंडलिंग और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। In digital computers, user input is first converted and transmitted as electrical pulses that can be represented by two unique states, that is on and off. Binary digits or strings of ones and zeros are used to represent all data stored on storage media. Different storage devices can be used to store data, including hard disk drives, solid state drives and flash storage. डिजिटल कंप्यूटरों में उपयोगकर्ता इनपुट को पहले विद्युत स्पंद के रूप में परिवर्तित और प्रेषित किया जाता है, जिसे दो अद्वितीय अवस्थाओं चालू और बंद द्वारा दर्शाया जा सकता है। डेटा को संग्रहित करने के लिए विभिन्न भंडारण उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और फ्लैश स्टोरेज शामिल हैं। The presented slide displays the evolution of data storage devices from 8-inch floppy disk to the micro SD card or cloud storage being used as data storage and backup media. प्रस्तुत स्लाइड 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क से लेकर माइक्रो एसडी कार्ड या क्लाउड स्टोरेज तक डेटा स्टोरेज और बैकअप मीडिया के रूप में उपयोग किए जा रहे डेटा स्टोरेज उपकरणों के विकास को प्रदर्शित करती है। Now, let us have an information about the different types of memory being used in a computer. अब हम कंप्यूटर में उपयोग की जा रही विभिन्न प्रकार की मेमोरी के बारे में जानकारी लेते हैं। Memory hierarchy is a design enhancement in the computer system to minimize access time. It includes multiple levels of memory, each with different sizes, costs and access times. इसमें स्मृति के कई स्तर शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग आकार, लागत और उपयोग का समय शामिल है। The levels in the memory hierarchy are CPU registers, cache memory, primary memory, secondary memory, and the tertiary memory. The primary memory includes registers, cache memory, and main memory. These are volatile memories. The secondary storage, such as hard disk drives and solid state drives, is used to store data not currently in use by the CPU. These are non-volatile memories. Magnetic disk and magnetic tapes are the types of secondary storage with slower access times. The memory hierarchy design enhances performance by minimizing the speed gap between CPU registers and main memory. Overall, a solid understanding of these fundamental components and concepts is essential for anyone seeking to understand and work with computers
effectively and efficiently. कुल मिलाकर कंप्यूटर के साथ प्रभावी ढंग से और कुशलता से समझने और काम करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए इन मौलिक घटकों और अवधारणाओं की ठोस समझ आवश्यक है. As technology continues to evolve, staying knowledgeable about the computer fundamentals will help individuals adapt and make informed decisions when working with computer systems. जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास जारी है, कंप्यूटर की बुनियादी बातों के बारे में जानकार रहने से व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रणालियों के साथ काम करते समय अनुकूलित करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी. Thank you from TeamUPAI for watching this video lecture on computer fundamentals. TeamUPAI की तरफ से कंप्यूटर फंडामेंटल पर इस वीडियो व्याख्यान को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद. This video has been prepared by TeamUPAI purely for the purposes of education and awareness. The experts have prepared the content based on information available online and in print. Examples and illustrations have been taken from various books, magazines, and articles. We do not intend to infringe any copyright. Resemblance, if any, is purely coincidental. TeamUPAI believes in open educational resources. We do not claim any copyright on the study material prepared by us. We do not intend to sell or earn revenue out of it. This video can be used without distortion by anyone for educational purposes. Srimati Monica S. Garg, Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, is the initiator, motivator, and architect of this module. Right from the conception of the idea of AI literacy for all and organization of TeamUPAI, she has guided each member of the team in her inimitable style. We thank Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, for leading us. We also thank SCRT for supporting us. Thank you for watching this video and joining our mission on AI literacy for all. Thank you. Jai Hind.